Hi guys, welcome back to another 11th standard introduction to accounts video. आज का हमारा टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. ऑलरेडी इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर चुके हैं, कैश अकाउंटिंग बेसिस एंड अक्रूवल अकाउंटिंग बेसिस. अब हमें कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन सीखने की जरूरत आ गई है. सो स्टे ट्यून. थोड़ा सा लंबा लेक्चर है बट इट इज डेफिनेटली अ वेरी इजी लेक्चर एंड अ फन लेक्चर. ओके, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो हमको देखना है बिजनेस ट्रांजैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शंस? अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीन्स मेरे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन. अब कोई भी ट्रांजैक्शन ईदर इन्वॉल्विंग होगा गुड्स और इन्वॉल्विंग होगा सर्विसेज. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स और सर्विसेज, ऑलवेज रिमेंबर कि दे शुड बी ईदर प्रोवाइडेड और रिसीव्ड. And second, most important, they should always have a value or money's worth. मतलब इनका कुछ मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए. तो इफ यू आर गिविंग सर्विसेज, टेकिंग सर्विसेज, गिविंग गुड्स, रिसीविंग गुड्स for a value or money's worth, then you are involved in a business transaction, right? Next, let's move on to the next one. Branches of business transactions. Now, in branches of business transactions, we have two types of transactions: monetary transactions, non-monetary transactions. सबसे पहले non-monetary transactions डिस्कस कर लेते हैं. नॉन-मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब जिसमें कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है. सो से फॉर एग्जांपल मम्मी आके आपको खाना बना के दे रही है, पैसे थोड़ी ना लेंगी. अब पैसे नहीं लेंगी तो दैट मीन्स दैट इज अ नॉन-मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. हेंस आई कैन नॉट कॉल इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. हेंस इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं. बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक चीज लेते थे उसके बदले में दूसरी चीज ले लेते थे. But there was no monetary value attached to these business transactions. Hence, they are not recorded in your books of accounts. Whereas monetary transactions, जिसमें either cash transactions or credit transactions are involved, are recorded in your books of accounts. Cash transactions मतलब जहाँ पे आप तुरंत कुछ दे रहे हैं, कैश ले रहे हैं, या कुछ ले रहे हैं और कैश दे रहे हैं. एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर में, आप जरूर उसके लिए पे करेंगे जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं या दे रहे हैं. So these were the business transactions: monetary, non-monetary, non-monetary, not recorded, monetary, recorded. Right? Next, monetary transactions. Let's understand the monetary transactions in depth. Transactions which involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly are called monetary transactions. Only monetary transactions are recorded in the books of accounts. हम already ये discuss कर चुके हैं. इसमें cash transactions और credit transactions. Cash transactions जो same date पे जब आप कुछ लें या खरीदें तो आप उसके पैसे भर देते हैं और सेम डेट पे रिकॉर्ड कर देते हैं. फाइनेंशियल बेनिफिट्स इज एक्सचेंज फॉर कैश ओनली. पेमेंट रिसीट ऑफ कैश चेक इज एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, सेम टाइम. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस डिफरेंट डेट पर रिकॉर्डिंग होती है. क्यों डिफरेंट डेट पर रिकॉर्डिंग होती है? क्योंकि आपने गुड्स या तो दे दिए या तो ले लिए, बट प्रॉमिस किया कि बाद में देता हूँ ना पैसे, बाद में दूंगा पैसे या बाद में लूंगा पैसे, चलेगा. सो दैट क्रेडिट पीरियड दैट यू आर गिविंग अ पर्सन, that is the credit transaction and also recorded under monetary transactions. Let's look at examples of cash transactions. So say for example, paid cash salary of 5,000 on 5th March, purchase of machinery of cash 40,000 rupees, sold 5 shirts for cash rupees 2,000, bought stationery items for cash rupees 350, beauty parlor services availed for cash rupees 1,500, bought movie tickets for rupees 600. All of these transactions involve cash transaction. Instant payment हो रही है. Hence
Goods and services are exchanged for money or cash on the same date and day. Record भी वो जिस दिन हो रहा है उसी दिन होगा. Next, let's look at examples of credit transactions. Purchase goods worth rupees 10,000 from Sunita on 10th April. खरीदारी की है on 10th April from Sunita for 10,000. But cash will be paid on 10th May. So when I'm going to say cash is going to be paid on 10th May, that means मैंने लिया अलग दिन पे और उसके पैसे दिए अलग दिन पे, and that's the reason why it is a credit transaction or a credit period is involved. Similarly, sold furniture to Meenakshi worth rupees 25,000 on 20th January 2000, received payment on 30th January. कब फर्नीचर सेल किया था और कब पैसे लिए, दोनों में डिफरेंस है. Bought inventory worth 65,000 on 5th of June, received delivery in warehouse on 10th June, paid by check on 15th June. So लिया एक दिन, रखा दूसरे दिन और उसकी पेमेंट ली तीसरे दिन. All the dates are different. Bought groceries from किराना शॉप, डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट्स की ग्रोसरीज लिए, बट आप उसका जो पेमेंट है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहे हो. सो ऑब्वियसली फॉर ऑल दीज डेट्स द डे इज डिफरेंट एंड द डेट ऑन विच द पेमेंट इज मेड इज different, and hence all of these are credit transactions because goods services are exchanged for money or cash which is paid on a future date. Chalo, next we look at non-monetary transactions, again something that I've already explained. Transactions which do not involve any exchange of money or money's worth directly or indirectly. ऐसा नहीं है कि इसकी कोई worth है अभी नहीं तो बाद में कोई वर्थ होगी, या ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज प्योरली एन एक्सचेंज फॉर नो वैल्यू ऑफ मनी. Non-monetary transactions are not recorded in the books of accounts. We have discussed that. Barter system, an exchange of one thing against another, is called barter system, and barter system is also a non-monetary transaction and not at all recorded in our books of accounts. Now from here onwards we are going to understand some terms and terminologies related to your accounts, related to your business and related to your accounting portion for 11th standard. So the first one being entry. What do you mean by entry? Entry is nothing but recording of a transaction in a proper manner or method in the books of accounts. So transaction, कोई भी transaction को record करना properly books of accounts में को कहते हैं entry. Whereas there is something connected to the entry which is called narration. What is narration? A brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called narration. So narration इस entry की छोटी सी एक explanation होती है कि ये entry थी क्या, ये entry की क्यों. So इस entry को explain करते हुए जो हम narration लिखते हैं, brief explanation लिखते हैं, उसको कहते हैं narration. इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये कैसे दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे हमारी ये जो दो आइटम्स हैं वो एंट्री बनती है और जो ये ब्रैकेट्स में लिखा है वो है नरेशन. नेक्स्ट, इधर भी हम लोग ने एग्जाम्पल दिया हुआ है. इफ यू सी दिस बिकम्स योर एंट्री एंड ये जो आप देख सकते हैं नीचे ब्रैकेट्स में, हर एंट्री के नीचे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट इज द नरेशन. Always remember narration kabhi bhi in your 11th as well as 12th standard portion, narration has to start with the word being. Next we move on to understanding goods. Very easy. Goods are what? Commodities or articles in which the trader deals. So अगर मेरा बुक्स का काम है तो बुक्स मेरे लिए गुड्स हो गए. अगर मेरा कपड़े का काम है तो जो क्लॉथ या मटेरियल है वो मेरे लिए गुड्स हो गया. अगर मेरा फर्नीचर का काम है तो जो वुड है वो मेरे गुड्स हो गए, या जो चेयर मैंने बनाई है, टेबल्स मैंने बनाई है, फर्नीचर मैंने बनाया है, वो गुड्स हो गए. सो गुड्स आर नथिंग बट योर कमोडिटीज और आर्टिकल्स जिसमें द डीलर इज डीलिंग और द बिजनेसमैन इज डीलिंग. These are purchased or manufactured for the purpose of sale and to earn profits. ये हम हमारे लिए नहीं रखते हैं, ना ही स्टॉक अप करने के लिए रखते हैं. इसको obviously
इंटेंशन पीछे ये रहती है कि वी कैन सेल इट एंड वी कैन अर्न सम मनी ऑन इट. Okay guys, so this is it. Coming up next, अगली क्लास में we are going to take the terms related to profit and loss account as well as the balance sheet. Also extremely important because अगर आपको ये words और terms नहीं पता होंगे, if you are not familiar with these terms, you will not be able to understand accounts ahead in future. So definitely do attend these videos. I will always put it up on my Instagram or on my Facebook page. If you like this video, if you like my hard work, please do give me a thumbs up. Do like my video. Definitely like, share and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon so that you are notified for a video every time I upload it. In case you want to follow me on Instagram and on Facebook, you could do the same by following me on AK's Academy by Akanksha. In case of any queries, any collaborations, do email me at aksacademybusiness@gmail.com. Till then, happy learning. Bye bye.